In the name of Allah, the most merciful and beneficent. My dear viewers, Assalamu alaikum. Today I have brought explanation of the poem The Solitary Reaper, composed by the famous poet William Wordsworth. I have included introduction of the poem, explanation of the stanzas, paraphrasing, questions of the solitary reaper given in the exercise, then grammar exercise, that is phonetic transcriptions. I have explained it in detail, and then the correct use of verb or the correct form of verb with complete explanation. I hope this video is useful to you, especially when the course is new and everyone is looking forward for explanation, paraphrasing, or some guideline how to do the poems and the question and the paraphrasing, etc. I request you to press like button, give your kind comments as well, as it encourages me a lot that my video is useful for you, you are taking advantage of it. If you have not subscribed my channel, I request you at the same time to subscribe it too. I'll be grateful to you. Now your poem is The Solitary Reaper. Solitary means तन्हा, अकेला. रीपर फसल काटने वाला, फसल की कटाई करने वाला. यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ एक देहाती लड़की के बारे में हमें बताता है जो कि तन्हा फसल काट रही थी. ये स्कॉटलैंड के पहाड़ी सिलसिले में वर्ड्सवर्थ और वर्ड्सवर्थ का दोस्त और वर्ड्सवर्थ की बहन ये एक टूर पे गए, हाईलैंड्स के टूर पे गए स्कॉटलैंड के, और जब वो वापस आए तो फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोम लिखी. अपनी एक वॉक के दौरान उसे एक तन्हा लड़की नजर आई जो कि फसल की कटाई में मसरूफ थी. वो लड़की कुदरत का एक हिस्सा नजर आ रही थी. वो अपने काम में इतनी मसरूफ थी कि उसे बिल्कुल पता ना चला कि वो कोई उसको देख रहा है या कोई उसको सुन रहा है. साथ साथ वो फसल की कटाई कर रही थी और वो बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था. वो अपनी दरांती पे झुकी हुई थी और फसल की कटाई में मसरूफ थी. साथ साथ वो गुनगुना रही थी, वो कोई गाना गा रही थी. विलियम वर्ड्सवर्थ उसके गाने से बहुत इम्प्रेस हुआ, बहुत मुतासिर हुआ. गाने के अल्फाज उसको समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि वो अपनी किसी मुकामी जुबान में कोई डायलेक्ट था, कोई मुकामी जुबान थी जिसमें वो गाना गा रही थी. अब पोएट को उसका मीनिंग भी समझ ना आया, उसका थीम भी समझ ना आया कि उसका मफहूम क्या है उस गाने का, क्योंकि उसे जुबान उसकी समझ नहीं आ रही थी. लेकिन जिस ट्यून में वो गाना गा रही थी वो ट्यून बहुत जबरदस्त थी. उस लड़की की आवाज में एक जादू था. उसकी आवाज से पूरी वादी गूंज रही थी क्योंकि बहुत खामोशी थी, बहुत सुकून था. नेचर्स ब्यूटी इज एज इट्स पीक. नेचर अपनी जो है वो खूबसूरती में अपने अरूज पर थी और वो उस कुदरत का हिस्सा नजर आ रही थी. जब वो फसल काट रही थी और गाना गा रही थी तो पोएट उसके गाने को नाइटिंगेल से या कुकू के साउंड से वो उसको कंपेयर करता है.
लेकिन वो कहता है कि नाइटिंगेल का सॉन्ग भी इतना खूबसूरत नहीं होता। वो जो सफ़र से, जो सहराओं में सफ़र करने वाले मुसाफिर होते हैं, चूँकि उनके लिए नाइटिंगेल की आवाज़ जो है वो बहुत ही सुकून देने वाली होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इस लड़की की आवाज़ थी और इसका सॉन्ग था। अब वो पोइट ये कहता है कि एंड पे वो ये कहता है, वो कुछ देर खड़ा रहा और उसने कहा कि मैं सबको सजेस्ट करूंगा, जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि या तो खामोशी से यहाँ खड़े हो जाएं, अगर उन्होंने ये गाना सुनना है उस लड़की का तो खामोशी से खड़े होके गाना सुने, या फिर खामोशी से दबे कदमों वो वहां से गुजर जाएं ताकि इस लड़की को डिस्टर्ब ना कर सकें, इस कुदरती खूबसूरती को डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें। फिर एंड पे पोइट कहता है, वो बहुत बेचैन हो जाता है कि ये किस बारे में ये गाना गाया जा रहा है। हो सकता है कि किसी पास्ट पुरानी जंगों के बारे में ये गाना गा रही है, उनके कोई इंसिडेंट्स हैं इस गाने के अंदर, क्योंकि है ये बहुत उदास किस्म का गाना, ये बहुत उदास गाना गा रही है। हो सकता है पुरानी जंगें जो लड़ी गई उनके बारे में, कुछ जो नुकसानात हुए उनके बारे में, या प्रेजेंट डे का कोई ख़ास इवेंट है, प्रेजेंट आजकल की कोई हॉट इशू है, या कोई ऐसा है क्या इंसिडेंट है उसके बारे में, फेमिलियर मैटर है उसके बारे में गाना गा रही है, या फ्यूचर में आने वाले किसी इंसिडेंट या किसी हैपनिंग के बारे में ये सॉन्ग है। राइटर बहुत कंफ्यूज होता है और कुछ क्वेश्चंस भी करता है कि ये किस बारे में है ये गाना। और फिर एंड पे कहता है कि मुझे इससे क्या मतलब, कि गाने का मफहूम चाहे कुछ भी हो, इसकी ट्यून ही इतनी खूबसूरत है, इस लड़की की आवाज़ ही इतनी खूबसूरत है कि इसने मेरे दिल और दिमाग पे एक ना ख़त्म होने वाला जो तासुर है वो छोड़ दिया है। It has left an everlasting impression on my mind and heart. मेरे दिल और दिमाग पे हमेशा रहने वाला एक तासुर इसने छोड़ दिया है। और वो कहता है कि फिर मैं आहिस्ता से वापस चला गया, जो कि मुझे जाना था। I climbed up the hills. मैंने उस हिल को, उस पहाड़ी पे चढ़ना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ डिम होती गई और फिर मुझे उसकी आवाज़ सुनाई ना दी। लेकिन उस आवाज का जो इम्प्रेशन था, जो तासर था, वो बहुत अरसा तक मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहा। So this is the story, this is the introduction of the poem The Solitary Reaper. Let us go towards the next slide. Introduction. In August of 1803, William Wordsworth, his sister Dorothy, and fellow poet Samuel Taylor Coleridge embarked on a walking tour of the Scottish Highlands. 1803 में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन और अपने साथी शायर के हमरा, कॉलरिज के हमरा, वो स्कॉटिश हाईलैंड्स के टूर पे गए। पहाड़ी सिलसिले हैं स्कॉटलैंड के। Wordsworth actually wrote The Solitary Reaper in 1805, nearly 2 years after this tour. This poem no doubt celebrates the divinity, solace, and simple joy the poet found in the natural world. ये पोएम, ये नज़म खुदाई उसको नज़र आती है इस कुदरती खूबसूरती में, डिविनिटी, खुदाई, सॉलिस, सुकून उसको मिलता है और उसको खुशी महसूस होती है इस कुदरती दुनिया को देख के। This poem, Solitary Reaper, is about a song sung by a lonely Highland girl while she is reaping the crops. ये नज़म सॉलिटरी रीपर, एक देहाती लड़की की, जो पहाड़ी लड़की है, उसके बारे में, उसके सॉन्ग के बारे में है, उसके गाने के बारे में। वाइल शी इज रीपिंग द क्रॉप्स, जब वो फसलें काट रही है। द पोइट पासेस बाय, शायर पास से गुजरता है, बट स्टॉप सडनली एज ही इज मेस्मराइज्ड बाय हर वॉइस एंड द ट्यून टू। वो अचानक रुक जाता है क्योंकि उस लड़की की आवाज़ और उस गाने की जो ट्यून है, उसकी जो धुन है, उसने वो बहुत ज़्यादा उसको तासुर डालती है उस पर, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है।
She is so much engrossed in her work that she does not notice the presence of anyone around. वो अपने काम में इतनी मसरूफ़ है कि वो अपने इर्द गिर्द किसी बंदे के वजूद का उसको एहसास ही नहीं होता. The poet does not want to disturb her, और पोइट भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता. Instead think either to stay here silently or just gently pass without disturbing her. और वो ये सोचता है कि, और हर एक से कहता है, सजेस्ट करता है लोगों से, या तो खामोशी से यहाँ खड़े रहें या उसके पास से आराम से गुजर जाएं और उसको डिस्टर्ब मत करें. शी इज लुकिंग अ पार्ट ऑफ नेचर. वो कुदरत का इस वक्त हिस्सा नजर आ रही है. वेरी कंफर्टेबल, पीसफुल, सीरीन एंड ट्रैंक्विल. Although poet is unable to understand the language and the song, poet को इस जो ये पोम है इसकी ज़ुबान समझ नहीं आ रही, इसका मफहूम समझ नहीं आ रहा, बट इज़ श्योर दैट इट मस्ट बी अ melancholy सॉन्ग एज द वेरी ट्यून सजेस्ट. लेकिन ये जो धुन है गाने की, ये बता रही है कि ये कोई बहुत ही उदास किस्म का गाना है, बहुत उदास गाना है. बट ही सेज दैट दिस सॉन्ग इज सो इंचैंटिंग दैट द होल वैली इज रिसाउंडिंग विद दर वॉइस एंड ओवरफ्लोइंग विद दर साउंड. लेकिन वो कहता है कि गाना जो है उसमें ऐसा जादू है कि पूरी वादी उसकी आवाज़ से गूंज रही है, उसकी आवाज़ से, उसके गाने से ओवरफ्लोइंग, यानी पूरी वादी में उसका गाना जो है वो फैला हुआ है. Then the poet compares the sweetness of her voice with melodious voice of nightingale and the cuckoo. फिर शायर उसकी आवाज़ को नाइटिंग बुलबुल की आवाज़ से और कुकू की आवाज़ से तशबीह देता है. But the poet is so spellbound at that time that he says, never has the nightingale so comforted the weary travelers as this Highland girl's song. लेकिन शायर जो है उस पर इतना उस गाने के जादू का असर हो चुका है कि वो कहता है कि किसी नाइटिंगेल ने भी, जो थके हुए मुसाफिर होते हैं, जो सहराओं में सफ़र करके आते हैं और एक दरख्त के साए के नीचे उन्हें जगह मिलती है, वो बैठते हैं और वो सुकून करते हैं, तो फिर नाइटिंगेल की आवाज़ उनके जहनों को सुकून पहुंचाती है और फिर उनको ये एक उम्मीद हो जाती है कि अब सहरा जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब जरखेज मैदान या खेत शुरू होने वाले हैं. ये एक उम्मीद की किरण, ये नाइटिंगेल की आवाज़ उनके लिए एक उम्मीद की किरण होती है कि अब ये जो सहराओं का जो सख्त और दुश्वार गुजार सफ़र है, अब ये ख़त्म होने को है. लेकिन वो कहता है कि नाइटिंगेल ने भी शायद उन इतने थके हुए मुसाफिरों को भी इतना सुकून नहीं पहुंचाया होगा जितना कि इस लड़की के गाने में जादू है. ही मीन्स टू से दैट हर वॉइस एंड हर सॉन्ग इज मोर एन्चेंटिंग. इसमें ज़्यादा जादू है, एंड मोर सूदिंग, इसमें ज़्यादा कंफर्ट है, देन द कुकू एंड द नाइटिंगेल. देन द पोइट आस्क्स नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा. The poet is so much anxious about the song's meaning कि poet इतना ज़्यादा anxious, इतना बेचैन हो चुका है कि इस गाने का क्या, इतने खूबसूरत धुन का और इस वर्डिंग का क्या मफहूम हो सकता है. He asks some rhetorical questions. Rhetorical questions means the questions which are asked to produce an effect or to make a statement rather than to elicit information. Now here he does not mean to really ask the meaning of the song. उसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई मीनिंग जानना चाहता है. अगर ऐसा होता तो वो उस लड़की के पास जाके उससे पूछ सकता था. लेकिन वो he wants to produce, he wants to exaggerate the beauty of the song or the beauty of the voice of that girl. Then the poet asks some rhetorical questions as he is quite confused about the theme and meaning of the poem. He speculates, और फिर खुद ही अंदाज़ा लगाता है, पूछते और क्वेश्चंस में जो बातें वो पूछ रहा है, he speculates that it might be about the past old unhappy things, कि हो सकता है क्या ये
पुराने जो कोई गमगीन वाक़यात हुए हैं पुराने ज़माने में उनके बारे में है, माइट बी अबाउट द ओल्ड बैटल्स एंड लॉसेस, पुरानी जंगें लड़ी गई थी शायद उनके बारे में है, जो नुकसानात हुए शायद उनके बारे में है, और मे बी इट इज़ अबाउट सम कॉमन हैपनिंग ऑफ प्रेजेंट लाइफ। क्या ये मौजूदा ज़िंदगी के जो आम रोज़मर्रा के मामलात हैं उनके बारे में क्या ये गाना गाया जा रहा है? इट माइट बी सम हम्बल एंड सिंपल सॉन्ग अबाउट सम नेचुरल सॉरो, लॉस एंड पेन। हो सकता है कि ये कोई बहुत ही आजिज़ सा कोई या बहुत ही सादा सा गाना हो जो किसी कुदरती वाक़े पे या कोई कुदरती अफसोस की बात हो, नुकसान या कोई दर्द है ऐसा जिसके बारे में गाया जा रहा है, दैट हैज़ अकर्ड इन द पास्ट, या तो वो माजी में ऐसा वाक़या हो चुका है या तो दोबारा होने वाला है। Finally, the poet realizes that he has nothing to do with the meaning and theme of the song. आखिरकार पोइट को यह एहसास होता है कि उसे इस गाने के मतलब या इसकी जो थीम है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। As the song and voice itself is worth appreciating, क्योंकि गाना बजाते खुद और आवाज़ जो है वो काबिल तारीफ हैं। She held the notes, sustaining them with great power, टोन एंड कंट्रोल। ये तो उस लड़की का कमाल है कि उसने गाने की जो धुन है, जो उतार चढ़ाव है, उसको कैसे उसने खूबसूरती से मेंटेन किया, ग्रेट पावर से, उसकी टोन, उसको कितने कंट्रोल से वो करिए। इसी वजह से तो ये बहुत खूबसूरत, हालांकि उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा लेकिन ट्यून बहुत खूबसूरत लग रही है। उसके लग रहा है कि किसी कोई उदास हैपनिंग के बारे में ये गाना गाया जा रहा है। It has everlasting effect on the poet's mind. Last time he saw the Highland girl bending on her sickle. आखिरी वक्त उसने उस पहाड़ी लड़की को देखा दोबारा कि वो अपनी दरांती पे झुकी हुई है, काट रही है फसलें, सिंगिंग एट हर वर्क, और गाना गाए जा रही है। ही लेफ्ट द प्लेस एंड माउंटेड अप द हिल। पोइट वहां से चला गया और पहाड़ी पे चढ़ने लगा। स्टिल लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑफ द गर्ल, अभी भी उसे उस लड़की की गाने की आवाज आ रही थी, विच वॉज रिसाउंडिंग इन द वैली। कुछ दूर तक वो गाना जो है वो गूंज रहा था उस वादी में। इट हैज़ ग्रेट पावर एंड कंट्रोल ओवर हिम, और गाने का उस पर इतना ज़्यादा उसने पोइट के दिमाग को, उसके दिल को इतना ज़्यादा अपने काबू में कर लिया दैट ऑल दो इज गॉन, वो जा चुका था वहाँ से, बट द सॉन्ग रिमेन्ड इन हिज हार्ट टिल लॉन्ग। लेकिन वो गाना उसके दिल में बहुत अरसा तक, एक लंबे अरसे तक उसके दिल में रहा, उसके दिलो दिमाग पर छाया रहा। This was the introduction of the poem The Solitary Reaper. It can be taken as a summary of the poem as well. Now see the first stanza. Behold her, single in the field, you solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the wail profound is overflowing with the sound. Now, explanation. Behold her, look at her. Now, in the very first word, in the very first line of the poem, the writer has captured the attention of the readers by telling them, by guiding them to look at her, single in the field. In this stanza, the poet says that on one of his solitary walks, he comes across a highland girl who is reaping crops. कि एक दफ़ा जब वो अकेला वॉक कर रहा था तो वो एक पहाड़ी लड़की के पास से गुजरा जो कि फसल काट रही थी। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग साइड बाय साइड, साथ साथ वो गाना गा रही थी। हाईली एनग्रॉस्ड इन हर थॉट्स एंड वर्क, चूँकि अपने काम में, अपनी सोचों में वो इस कदर मगन थी, शी कुड नॉट नोटिस द प्रेजेंस ऑफ द पोइट देयर, कि वहाँ उसे शायर की मौजूदगी का एहसास ना हुआ। She was reaping crops and singing songs side by side. She is looking part of nature. उस वक्त वो सिर्फ कुदरत का हिस्सा नजर आ रही थी।
The poet is so impressed by her indifference to her surroundings. पोइट जो है वो इम्प्रेस हुआ कि वो कितनी, वो बिल्कुल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके पास से गुजर गया. That he suggests to either stop there. फिर वो सजेस्ट करता है सबको कि जो भी यहाँ से गुजरे या तो खामोशी से खड़ा होके गाना सुने एंड एंजॉय दिस मेलनकली सॉन्ग, इस अफसुर्दा गाने को एंजॉय करे और जेंटली पास बाय या फिर खामोशी से गुजर जाए सो दैट शी मे नॉट बी डिस्टर्ब, ताकि उसको वो डिस्टर्ब ना हो. Sitting all alone, cutting and binding the grains, अकेले बैठे हुए फसलें काटते हुए उसको आपस में अनाज को आपस में बांधते हुए विद accompanying melancholy strain, और एक उदास सा उसको एक उदासी उस पे छाई हुई थी. that the poet could not understand the language, के पोइट जो है उसको जुबान की समझ तो ना आई, but focuses on the mood, वो यहाँ पे मूड पे फोकस कर रहा है, टोन पे, ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग, कि गाना कितना खूबसूरत है. The whole valley is resounding with her voice. The song is so enchanting that the poet goes to the extent of saying that the whole valley is overflowing with her wonderfully melodic song. वो कहते हैं कि पूरी वैली जो है वो भर गई है, उस पूरी वैली में उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत जो है वो हैरान कुन, हैरत अंगेज आवाज़ और सॉन्ग छा गया है. इट हैज़ मेड द पोइट calm एंड रिलैक्स टू, और पोइट भी बहुत ही उसको सुकून महसूस हुआ. Now, the first 4 lines of the poem closely approximate a stanza of a ballad, while the next 4 lines approximate heroic couplet. Now, what is ballad? Now, ballad is a poem or the song narrating a story in short stanzas. अब आप देखें कि ये क्यों फर्स्ट 4 लाइन्स में बैलेड उसने उसका पैटर्न उसने इंक्लूड किया है, कि वो हमें जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो हमें स्टोरी सुनाने लगा है. Behold her all alone in the field, she's cutting and she's reaping and binding the grains now, and singing a song. ये एक स्टोरी हमें पोइट ने सुनाई. सो इट सीम्स टू बी अ फॉर्म ऑफ बैलेड, जबकि नेक्स्ट 4 लाइन्स जो हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ heroic couplet. That is the story of a hero or heroine admirably who is very brave or determined and very courageous. So it definitely, it is almost the same. Pattern is the same. Imagery is richly employed as it appeals to the sight and ears. It is a pictorial description of the young girl solitary reaper at work. He is totally transfixed by delightful and harmonious song of the girl. Now, what literary devices are used here in this stanza? A literary device, assonance, that is the repetition of the vowel sounds in the same line, is used in the first stanza, such as the sound of I in behold her single in the field. Now, single in field, sound of I, vowel sound, and the sound of O and A in yawn, solitary, highland, lass. Yawn, solitary, highland, lass, O and A sound. So this is a literary device, that is assonance, repetition of the vowel sounds in a line. Paraphrasing of this stanza, look at her alone in the field, that solitary highland girl. She is reaping the crops and singing songs side by side. Just stop here to listen to her song or gently pass by, but never disturb her as she is engrossed in her work. She is cutting and binding the grains all alone and singing a very melodious song which seems to be melancholy and sad. But listen as the whole deep valley is resounding and overflowing with her voice too. This is how you have to do paraphrasing. Coming to stanza number 2.
No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Hebrides, these are the Scottish highlands. Explanation. In this second stanza, the poet compares the voice of the solitary reaper with that of the nightingale. In the romantic poetry, the sound of the nightingale is described as very melodious and welcoming. ये romantic poetry में especially nightingale को बहुत ज़्यादा importance दी गई है, उसकी voice को बहुत melodious और welcoming तस्वर किया गया और इसको यूज किया गया रोमांटिक पोइट्री में. द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेबियन सैंड्स मेंशन्ड इन दिस स्टैंजा पर्पसफुली दैट इन अरब देयर आर डेजर्ट्स इन विच इट टेक्स मंथ्स फॉर पीपल टू क्रॉस देम. अरेबियन सैंड्स का स्पेशली जिक्र हुआ इस स्टैंजा में in order to exaggerate the effect of that song. उसने कहा कि अरेबियन सैंड ज़ाहिरी बात है मशहूर है, बहुत वसी सहराएं हैं ये जिनमें ट्रैवलर्स को महीनों और कभी तो साल लग जाते हैं. कोई और इतनी हार्डशिप्स होती हैं अरेबियन सैंड्स में, उनके रास्ते में इतनी रुकावटें, डेफिनेटली पानी और खुराक उनको साथ लेके चलना पड़ता है. और बाज़ समटाइम्स तो ऐसा होता था कि वो सहराओं में ही रास्ते में पानी या खुराक की किल्लत से ही मर जाते थे, ये इतनी हार्डशिप्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और रास्ते में ही उन ट्रैवलर्स की डेथ हो जाती थी. So many times they forget the way or die because of the extreme heat or thirst. In such a desert, if weary bands, that is tired travelers who may be taking rest under shade of trees, happen to hear the nightingales chanting, इतनी धूप, प्यास, खुराक की जो भूख है, उसके बाद जब और इतनी शिद्दत के प्यास, उनको जब किसी दरख्त, कोई सायादार दरख्त नज़र आता था तो वो उनके लिए बहुत सूदिंग बात थी, उनको बहुत कंफर्ट देता था. और जब वो उसके नीचे, उसके साए के नीचे बैठते थे और उस दरख्त के ऊपर उनको नाइटिंगेल की आवाज़ आती थी तो इट विल बी द मोस्ट जॉयफुल वॉइस फॉर देम. तो उनके लिए तो बहुत ही खुशी का ये लम्हा था. एंड बिकॉज दे विल कम टू नो दैट इट इज़ द एंड ऑफ द ड्रेड डेजर्ट. और ख़ास तौर पे वो उनको ये उम्मीद हो जाती थी अब ये जो खौफनाक सहरा है, अब इसके खात्मे का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब उनको ये नाइटिंगेल की आवाज़ सुनाई दी. Now the poet compares the singing of solitary reaper with the voice of cuckoo bird. अब शायर जो है वो solitary reaper के गाने को कुकू की आवाज़ से भी तशबीह देता है. According to the poet, the voice of solitary reaper was so melodious, इतनी खूबसूरत है that he never heard it from the cuckoo bird in springtime, कि even जब कुकू always gives the news of the springtime, तो वो कहते कि और फिर वो एक खुशी का लम्हा होता है कि जब बहार का मौसम आता है, विच ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हेब्राइड्स. और वो फिर कहते हैं कि ये बहुत दूर दराज स्कॉटलैंड के जो आइलैंड्स हैं, ऑलमोस्ट दे आर 500 आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ 500 आइलैंड्स को हेब्राइड्स का नाम दिया गया है और वो बहुत दूर दराज वाक़या हैं. वो कहते हैं कि वहाँ पे जब कुकू जो है वो दूर दराज जो अनजाने समंदर हैं वहाँ पे जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वो स्प्रिंग के आने की खबर देता है तो ये बहुत ही खुशकुन लम्हा होता है. But he finally reaches to the conclusion that the reaper's voice is more pleasurable to any listening ear around. वो कहते हैं कि लेकिन ये जो रीपर है, ये जो फसल काटने वाली लड़की, इसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें जादू है. द स्पीकर ट्राइज आउट अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल मेटाफर्स फॉर सॉन्ग. और अब देखें कि पोइट ने यहाँ पे बहुत से मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है. ही कंपेयर्स द लैस टू अ नाइटिंगेल, वो इस पहाड़ी लड़की को एक नाइटिंगेल से तशबीह देता है, एंड कुकू बर्ड. ही एम्प्लॉयज द हाई डिक्शन traditional to poetic descriptions of strange foreign beauty invoking Arabian sands. अब आप देखिए वो ऐसी जुबान का, ऐसी लैंग्वेज का, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है जो कि पोइटिक के फार ऑफ अरेबियन सैंड से वो इसको मिला रहा है, फारदेस्ट हेब्राइड से.
So he richly employs the vocabulary and the metaphors. But in each case, he admits that the beauty of the last song exceeds these traditionally beautiful things. ये जो रिवायती खूबसूरत चीज़ें हैं, इनसे भी इस लड़की के गाने की जो खूबसूरती है वो आगे बढ़ गई है. हर सॉन्ग ट्रांसेंड्स नॉट ओनली लैंग्वेज, उसका जो गाना है वो ना सिर्फ ज़ुबान के बैरियर को क्रॉस कर रहा है, देन बट ऑल्सो द रिसोर्सेज ऑफ पोइट्री, एटलीस्ट द ट्रेडिशनल रिसोर्सेज ऑफ पोइटिक. नाउ वो कहते हैं कि ना सिर्फ क्योंकि ज़ुबान समझ आने वाली नहीं है, वो कोई ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, वो कोई लोकल डायलेक्ट है जिसमें गाना गाया जा रहा है, लेकिन वो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग. सॉन्ग की खूबसूरती से इसका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि वो उसकी ट्यून ही, उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, गाने की धुन इतनी खूबसूरत है कि कोई भी नो वन बॉदर्स अबाउट द मीनिंग ऑफ द पोम. Poetic cliche, at least the traditional resources of poetic cliche, यानी traditional use of cliches के poems में जो traditionally जो opinion या phrase which is overused. So he says that it transcends all these things. ये traditional poetry और जो boundaries and everything has been exceeded. So symbolism, cuckoo and nightingale are used as the symbols of sweet melodies, whereas the song of the lady symbolizes her intense pain and distress. ये जो सॉन्ग है ये एटलीस्ट हमें बताता है कि कोई बहुत ज़्यादा दुख और दर्द की कहानी है जो इस गाने में बयान की गई है. Now, the poetic device that is enjambment is used in the line breaking the silence of the sea among the farthest Hebrides. Now see, enjambment is when there is no the line does not end. Now breaking the silence of the sea, there is no mark, there is no punctuation marks are not used, so it does not end here. It is called enjambment. When a line ends with no punctuation mark, either comma, full stop, exclamation or whatever. So enjambment is used here, but another poetic device is also used here in this stanza. Consonance is used here in the first line, silence of the sea. Now see the sound of S here, silence of the sea. Now, paraphrasing of the stanza, the girl's voice is as sweet and melodious as that of a nightingale, but no nightingale can ever sing a song so sweet in order to welcome the exhausted travelers and to relieve them of their mental and physical fatigue. No nightingale song can ever be so soothing for the travelers in the vast and harsh Arabian sands when they sit under some shady tree as the song of this highland girl. Similarly, such a thrilling voice can never be heard and felt even in the springtime from the cuckoo bird who breaks the silence of the sea among the far-off Hebrides. The song and the voice of the girl is unmatchable. This girl's song is breaking the silence of the highland. Stanza number 3. Will no one tell me what she sings? In stanza 3, will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far-off things and battles long ago. Or is it some more humble lay, familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? Now see, in this stanza, the poet exaggerates or improves the effect of that song, the beauty of that song, by putting forward some rhetorical questions. ये rhetorical questions जो है वो बता रहा है in order to produce the effect of something, you know. अभी वो पूछ नहीं रहा, वो आंसर्स नहीं चाह रहा, वो सिर्फ इस पोम में खूबसूरती पैदा करने के लिए, उस गाने की खूबसूरती को एग्जेजरेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस बता रहा है, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, खुद से ही पूछ रहा है और खुद ही उसको स्पेक्युलेट भी कर रहा है, अंदाज़ा भी लगा रहा है कि ये किस बारे में हो सकता है.
In this stanza, the poet is expressing his unfamiliarity with the language of the song sung by the solitary reaper. He instantly puts forward rhetorical questions. He wonders if there is anyone who will be able to tell him what she is singing. क्या कोई इस काबिल है जो मुझे बता सके? क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो क्या गा रही है? He guesses that it might be plaintive numbers, that is sad and mournful song in her own language, that of Scotland. क्या वो कहते हैं कि किसी उदास या कोई गमगीन गाना गा रही है अपनी जुबान में, which are about unhappy past or lost things, जो कि किसी पुराने कोई गमगीन कोई उदास कर देने वाला वाक़या हुआ किसी नुकसान के बारे में, और some battle which might have taken place long ago, या किसी जंग के बारे में गा रही है जो बहुत पहले लड़ी जा चुकी हो. The poet again guesses that the song can also be about humble lay, that is ordinary nature and day-to-day matters. हो सकता है कि पोइट गलत हो, क्या पता ये किसी आम किसी वाक्य के बारे में हो, डे टू डे मैटर्स, रोजमर्रा के मामलात पे कुछ गा रही हो. इट कैन बी सम नेचुरल सॉरो और लॉस और पेन, कुदरती कोई गम या नुकसान या कोई दर्द है जिसके बारे में है, विच माइट हैव टेकन प्लेस इन हर लाइफ रिसेंटली. शायद वो पहले उसके साथ वाकया हो चुका है, या शी माइट बी फेयरिंग फॉर फेसिंग इट अगेन, या उसे ये डर है कि दोबारा वो होने वाला है ये वाकया. द पोइट डिस्क्राइब्स प्योर एंड अनप्रिटेंशियस ब्यूटी ऑफ द रीपर सॉन्ग. यहाँ पे इनफैक्ट वो किसी बहुत ही, वो कहते हैं कि ये जो फसल काटने वाली लड़की है उसकी सॉन्ग की जो खूबसूरती है अनप्रिटेंशियस ब्यूटी है, दिखावे की नहीं है. वो नेचुरली वो गाए जा रही है, वो किसी को सुना नहीं रही, वो अपने लिए गा रही है, अपने गाने में वो अपने काम में मगन, अपने गाने में मगन वो गा रही है, और प्योर और अनप्रिटेंशियस ब्यूटी है इस गाने की. Here, a literary device that is consonance is used, repetition of the consonant sounds in the same line, such as the sound R in some natural sorrow, loss or pain, and the sound of M in or is it some more humble lay, some more humble. Sound of in this stanza. So this is consonant sound. Paraphrasing of this stanza, the poet in great confusion asks some rhetorical questions about the language, meaning and theme of the song. Then he asks if the song is about some sorrowful incidents of old, unhappy and ancient times or battles of the past, or it might be the famous matter of present day life. Is this song about the natural sorrow, loss or some painful thing that has occurred in the past or is going to happen in the future? Stanza number 4 and the last stanza. Whatever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. Now see, in the final stanza, the poet comes to realize that he should not be concerned with the meaning of the song as it is in her own Scottish dialect, and says that whatever may be the theme of the song sung by the maiden the solitary reaper, she sang so sweetly and profoundly that the poet wished it would never end. उसने इतनी खूबसूरती से गाया, चाहे कोई मफहूम हो, कोई मानी भी हो, लेकिन ये गाना इतनी खूबसूरती से गाया गया कि पोइट ने ये ख्वाहिश की कि ये गाना कभी भी ख़त्म ना हो. The power of the Reaper song transcends cultural and linguistic barriers. रीपर के जो गाने की जो ताकत है वो तमाम सकाफती और ज़ुबान के जो जितने भी बैरियर्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनसे आगे निकल गई है. इट हैज़ एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड एंड हार्ट. इट हैज़ स्टिमुलेटेड द माइंड ऑफ द पोएट एंड मेड हिम calm and relaxed. The poet repeats the beginning scene. According to him, he saw her singing at her work, reaping the crops, and while she was bending her sickle over the crops.
वो अपनी सिकल जो दरांती है उसके ऊपर वो झुकी हुई है और बस अपने काम में मगन है. He listened to her silently and without making any movement. However, when he started traveling up the hill, जब उसने दोबारा पहाड़ी पे चढ़ना शुरू किया, he could not hear her and the music was inscribed in his heart. वो उसको और उसकी आवाज़ ना सुन सका, लेकिन म्यूजिक उसके दिल में रच बस गया, लिखा गया. The poet has portrayed an awesome relationship that exists between nature and music. अब आप देखें कि इसमें कुदरती खूबसूरती और जो म्यूज़िक है उसके दरमियान भी एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ पाया जाता है. द पोइट नाउ वो कहते हैं कि खूबसूरती, इट मीन्स दैट म्यूज़िक एंड नेचुरल ब्यूटी, they go side by side together, they have great power. That's why it has left an everlasting impression on the mind of the poet. The poet uses hyperbole, a device which is used to exaggerate any statement for the sake of emphasis. For example, the below verses exaggerate the impact of her song. Oh, listen, for the wail profound is overflowing with the sound. Now see, ये exaggeration जो है वो poet ने use की इसके लिए hyperbole. It is a literary device which is used by the poet in order to exaggerate the effect of the song or something else. Now the poet has realized that he has nothing to do with the theme of the maiden's song, but it is a fact that her song seems to have an everlasting impression on the heart and mind. I saw her singing while doing her work, as she is engrossed in her work, bending on her sickle. I listened to her silently and carefully, quite still and motionless. It impressed me too much. But as I mounted up the hill, I could hear that voice no more, but the music of the song remained in my heart and mind long afterwards. This is paraphrasing of the stanza. That's all about the explanation and paraphrasing of the poem, The Solitary Reaper. Coming to the questions which are given in the exercise of the poem, what is the theme of the poem, The Solitary Reaper? Our emotions are profoundly tied to musical sounds, while we also have a deeply rooted emotional connection with nature. What I think is that music and nature together have a very powerful effect on the minds of the people. So this must be the theme कि throughout आप natural beauty भी बयान कर रहे हैं और साथ में you are impressed और वो song भी पूरी valley में फैला हुआ है. It increases the beauty of that place. Nature is an aesthetic object which creates a particular sensibility or emotion within the poet in The Solitary Reaper. The woman who is toiling in the fields seemed to the poet part of the landscape. That is, she doesn't exist as an individual but as a decorative or effective element in the scene that the poet is describing. Therefore, the poet wants to impress upon the readers that nature comforts man and music is beautiful with its melody, harmony, rhythm and timbre, and together they make a perfect relationship. By listening to sad songs when you feel sad, you encourage the feeling of being understood and connecting to other humans on a deep level, which can provide a feeling of release and catharsis. ये जो पोइट्री आप सुनते हैं, जो सॉन्ग आप सुनते हैं, it seems to be an, expression of your own inner feelings. So it's a catharsis, it's a release, it's a catharsis. Both the singer and Wordsworth got united to nature with the beauty of music and musical melody. So the Solitary Reaper used her singing to suppress all worries that were assumed by the poet in the context of the poem. Question number 2. How does Wordsworth describe the song of the Solitary Reaper? This poem, Solitary Reaper, is about the song sung by a lonely highland girl while she is reaping the crops.
The poet passes by, but stops suddenly as he is mesmerized by her voice and the lyrics too. Although the poet is unable to understand the language and the song, but he is sure that it must be a melancholy song as the very tune suggests. Then the poet compares the sweetness of her voice with melodious voice of nightingale, and the lyrics are being repeated incessantly like a cuckoo. He means to say that her voice and her song is more enchanting and soothing than the cuckoo and the nightingale. Then the poet asks some rhetorical questions as he is quite confused about the theme and meaning of the poem. He speculates that it might be about the past old unhappy things, or might be about the old battles and losses, or maybe it is about some common happening of present life. It might be some humble and simple song about some natural sorrow, loss, pain that has occurred in the past or is likely to occur again. At the end, the poet says that whatever may be the theme of the song sung by the maiden, she sang so sweetly and profoundly that the poet wished it would never end. The power of the reaper's song transcends cultural and linguistic barriers. It has an everlasting impression on his mind and heart. I have already explained these things in the poem. I hope the things are easy for you to understand. Question number 3 is, what are the poet's feelings about the song as are expressed in the second stanza of the poem, The Solitary Reaper? Your answer is, the poet says that the song is so enchanting that the whole valley is resounding with her voice. He compares this beautiful song and voice of solitary reaper with that of nightingale and the voice of cuckoo bird. According to the poet, the voice of solitary reaper was so melodious that he never heard it from the nightingale which soothes the weary travelers of the desert, and cuckoo bird in springtime which breaks the silence of the seas among the farthest Hebrides. He finally reaches to the conclusion that the reaper's voice is more pleasurable to any listening ear around. Describe in your own words the visual images depicted in the first stanza of the poem, The Solitary Reaper. The poet has employed rich visual imagery in the stanza. In the very first line, he tells the readers to first glimpse the reaper, reaping and singing by herself. Behold her, single in the field. It is a pictorial description of the young girl at work. She is all alone and engrossed in cutting and binding the grain. She is looking like a part of nature and quite indifferent to her surroundings and the people. It allows the readers to clearly see the lonely Highland girl at work and envision her character as representative of the content of the poem. The readers can visualize the fields of the wild highlands where the reaper is busy at work. So visual images are given in the first stanza of the poem. Give the examples of alliteration from the solitary reaper. What is alliteration? Alliteration is the repetition of consonant sounds in the same line as quick succession. In the poem, the sound of P in perhaps the plaintive number flow, perhaps plaintive, and the sound of N in no nightingale did ever chant, S in the silence of the seas are the examples of the alliteration in the poem. Question number 6. As you read the third stanza of The Solitary Reaper, what pictures of the situation do you make in your mind? The third stanza is again a pictorial details of the travelers who travel in the harsh, rough, dry and vast Arabian deserts and finally reach at the place where they find a shady tree and feel relief at heart and mind. Their nightingale's songs soothe their ears too, and they are highly consoled. Similarly, the cuckoo's song is so soothing and breaks the monotony of the Hebrides. Question number 7. Explain the last stanza of The Solitary Reaper in your own words. In the final stanza, the poet comes to realize that he should not be concerned with the meaning of the song as it is in our own Scottish dialect, and says that whatever may be the theme of the song sung by the maiden, she sang so sweetly, profoundly, that the poet wished it would never end. The power of the reaper's song transcends cultural and linguistic barriers. It has an everlasting impression on his mind and heart. It has stimulated the mind of the poet and made him calm and relaxed. The poet repeats the beginning scene. According to him, he saw her singing at her work, and while she was bending over her sickle to cut the crops,
He listened to her silently and without making any movement. However, when he started traveling up the hill, he could not hear her, and the music was inscribed in his heart. What is the dominant theme of the poem, The Solitary Reaper? The poem's major theme is the power of human imagination to see the transcendent in the everyday. It transforms the common, everyday events into representations of a larger reality. अब आप देखें कि singing of the Highland girl, her song, it might be a very common thing for that girl, for that valley, for the people. वहाँ रहने वाले लोगों के लिए, उस लड़की के लिए, खुद के लिए, उस वादी के लिए, it must be a common thing. लेकिन पोइट ने एक कॉमन हैपनिंग को उसने एक लार्जर रियलिटी में उसने रिप्रेजेंट किया. Our emotions are profoundly tied to musical sounds, while we also have a deeply rooted emotional connection with nature. अब इसकी वजह यह है कि पोइट जो है, he has a close connection with nature. कुदरती खूबसूरती के साथ उसका प्यार है, उसको डिविनिटी नजर आती है, उसमें उसको सॉलिस नजर आता है नेचर के अंदर. और फिर उस लड़की का सॉन्ग जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर. उसकी ट्यून ही इतनी खूबसूरत है कि उसने पोइट को बहुत ज़्यादा मेस्मराइज कर दिया. उसको वो कहते हैं कि इट हैज़ एन एन्चेंटिंग इफेक्ट, बहुत जादू कर दिया उसके सॉन्ग ने उसके दिल पे. सो टुगेदर दे हैड अ ग्रेट पावर. Nature is an aesthetic object which creates a particular sensibility or emotion within the poet in The Solitary Reaper. It has an everlasting impression on the heart and mind. Therefore, the poet wants to impress upon the readers that nature comforts man, and music is beautiful with its melody, harmony, rhythm, and timbre, and together they make a perfect relationship. These were all about the explanation of the questions. Coming to the exercise of this poem, Solitary Reaper, here on the screen you will see the names of the animals and their phonetic transcriptions. I'll try to explain it again. So many things, and these expressions, this pronunciation has been explained earlier as well in the previous videos. Now see the very first transcription, phonetic transcription, A, I, when comes together, I. Its pronunciation is I. And then this turned E, अपसाइड डाउन टर्न्ड ई जो है, ये मैंने आपको बताया था, it gives the pronunciation of so tiger. Now the next one is A and E joined together. आपने पहले भी ये एक्सप्रेशन देखा था. A और E जब आपस में जुड़े हुए आपको डिक्शनरी में नजर आए और आप किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं और उसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस में हमेशा आप डिक्शनरी में देखिएगा कि आपको इस तरह की, और वही बच्चे, वही स्टूडेंट्स, वही लोग इसको सही प्रोनाउंस कर सकते हैं जब वो इन सिंबल्स से फेमिलियर होंगे. अब आप देखिए A and E together gives the sound of a rabbit. Now the next one is again A and E sounds. These transcriptions are joined together. Its sound is a hamster. Now see, इसके भी एंड पे आपको अपसाइड डाउन ई का साउंड अपसाइड डाउन एंड पे नजर आ रहा है. ये जब भी किसी सेंटेंस, किसी वर्ड के एंड पे आएगा, इट गिव्स द साउंड ऑफ आर का साउंड आएगा. सो इट इज एंड ए एंड ई ए हैमस्टर. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड. देखें बी आई, जब भी उसके बाद दो डॉट्स हो तो इसका मतलब है कि इसको आपने लॉन्ग करके पढ़ना है. ठीक है, इसको आपने लंबा करना है. इट मीन्स इट इज ई, इट इज नॉट आई के बाद दो डॉट्स हैं तो इसका साउंड होगा ई. बी ई, बहुत आपने इसको लॉन्ग करना है. टी एल,
It means that it is beetle. Beetle. Again, the next word is GU और U के बाद 2 डॉट्स हैं. इसका मतलब है आपने U को ऊ यानी इसको लंबा करना है आपने. It must be goose. Again, now A and this U shape वर्ड आपने प्रीवियस आप वीडियो देखिएगा, उसमें अलग अलग से ये साउंड्स डिफाइन किए हैं. मैंने उनको एक्सप्लेन किया है कि जब ये दो इकट्ठे आएंगे तो आओ, इट साउंड्स एज आओ. सो के ए एंड दिस शेप ऑफ यू टुगेदर इट मेक्स काउ. अगेन द वर्ड इज एम एंड ये जो उल्टा साइन है अ, it gives the sound of a. Monkey. It is monkey. It is not monkey. It is monkey. Again, अब आप देखें M के बाद A और वही U का साउंड शेप जो है वो इकट्ठी है आओ. So it is mouse. Then comes ये देखिए ये जो साइन है और ये श का साउंड है, इसको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किया था कि ये वाला साइन जब भी आपके सामने आए तो इट इज द साउंड ऑफ शीप. और आई के बाद 2 डॉट है तो इट इज ई शीप. पहला जो साइन है वो शी का साउंड दे रहा है, आई को आपने ई पढ़ना है तो इट इज शीप. अगेन ए एंड आई जो फर्स्ट वर्ड में देखिए टाइगर में इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप देखिए ए एंड आई आई. अगेन दिस ए आई कम्स आई. स्पाई. और ये जो एंड पे अपसाइड डाउन ई हमें नजर आ रहा है, मैंने आपको बताया था इसको हमेशा आपने अर पढ़ना है. सो स्पाइडर. स्पाइडर अर. आई होप दिस इज क्लियर. ये साइंस आप अपने माइंड में रख लें तो आपके को प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल नहीं होगी. कमिंग टू द कैरेक्टर्स. नाउ देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल. उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं या को क्या है, उनके कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं कुछ वर्ड्स यहां पे. अब आप देखें एस आई उल्टाई अर. सीरियस. Serious. Careful. K E 2 dots. Careful. Careful. Confused. Confuse. Now see F J. Foo. Confused. D एंड Z साउंड टुगेदर, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियोस में डिफाइन किया था कि जब D और Z इकट्ठे आ जाएं तो इट गिव्स द साउंड ऑफ टुगेदर. ये जो है वो ज का साउंड देंगे. ज. जेनरस. नेक्स्ट वर्ड इज डिटर्मिन्ड. नाउ ये जो उल्टा ई है और डिटर्मिन्ड. Again, strange. D and Z, J sound. Strange. Brave. BR. Now, EIA. Brave. Again, D and Z comes together. It means it gives the sound of J. G. So, gentle. Honest. It is not honest. It is honest. Honest. Now, J and U. Q. Curious. Now, some miscellaneous words are given in your exercise like, now see this sign always is the sound. ये आप याद रखिएगा, जब ये वाला साउंड हो और उसके ऊपर छोटा सा एक ओ है और उसके ऊपर छोटा सा क्रॉस है, इट गिव्स द साउंड ऑफ द. दैट. डिफिकल्ट. difficult. You. Now J and U is you.
और यू के बाद दो डॉट्स हैं, उसको आपने लंबा करना है, यू, WIT, and that again the sound of ch, which, there, the and there, about, photo, or. Now see, ulta E and U together, O, photo. Shout, people, PI, I के बाद दो डॉट है तो इसको E पढ़ना है, प्रोलॉन्ग करके, इसको थोड़ा लॉन्ग करना है, people. Also, this upside down sign is under, problem, never. So this is never. अब आप कुछ वर्ड्स जो हैं उनके साइंस को आप माइंड में रखेंगे, then it would be easy for you to pronounce the word. Again, there are some words on this slide. E and to R, उल्टा E का साउंड देगा, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया. It is service. आप सर्विस नहीं कहेंगे, it is service. Something, ये जो उल्टा निशान है S के बाद it always gives the sound of some, and ये जो थीटा वाला साइन है, it gives the sound of th, so it is something. Place, E and I, A, place. Point, provide. Large, अब आप देखें D और Z together, G का साउंड देते हैं हमेशा, it is large. General, now D and Z comes at the beginning of the word, it gives the sound of G, general. I hope it is clear to you. And the last question in your exercise is, use the correct form of verbs given in the brackets. Number 1, your friends have been dash for you for over an hour. Now, in the bracket, we have to use the word wait. But in what form? In the correct form of the verb. अब आप देखें कि your friend have been, it means that it is present perfect continuous tense. कि काम थोड़ा पहले स्टार्ट हुआ है लेकिन अब भी जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. योर फ्रेंड्स हैव बीन, और हैव बीन के बाद हम वेट नहीं कह सकते, हम वेटेड नहीं कह सकते. इट मीन्स वी हैव टू पुट ing with the verb. In present continuous tense we always use ing with verb in order to show the continuity of the some action, कि काम अब भी जारी है और उसके लिए हम ing यूज करते हैं. Your friends have been waiting for you for over an hour. For over an hour. Have been for an hour shows that it is present perfect continuous tense. और फिर फौरन आपके माइंड में आ जाएगा तो कि we have to use ing. Number 2, it is not worth dash so much money for this concert. It is not worth paying. इस कॉन्सर्ट के लिए, ये इस कॉन्सर्ट इतना इस काबिल नहीं है कि इसके लिए हम इतने ज़्यादा पैसे खर्च करें. इट इज़ नॉट वर्थ पेइंग. जैसे हम किसी प्लेस का कहते हैं, इट इज़ नॉट वर्थ विजिटिंग, सो इट इज़ नॉट वर्थ पेइंग सो मच मनी. व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, ठीक है, पास्ट टेंस है ऑलरेडी. द ट्रेन डैश लेफ्ट, आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, ठीक है. ये आपको एक मैं टेक्निक बता रही हूं कि जब सेंटेंस के एक हिस्से में सिंपल पास्ट टेंस यूज हो तो सेंटेंस का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, हैड के साथ आप वर्ड यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब.
When I reached the station, देखिए अब इस सेंटेंस के इस हिस्से में सिंपल पास्ट वर्ड है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है reached. तो नेक्स्ट में आपने जरूर पास्ट परफेक्ट यूज करना है, had left. Number 4, I visited the बादशाही मॉस्क last month. पिछले महीने मैंने बादशाही मॉस्क की सैर की. I visited, simple past tense. The criminal attacked the victim with a blunt object. जाहिर है अटैक हो चुका है जिसके बारे में बात है हो रही है, तो इट मीन्स दैट वी हैव टू यूज पास्ट टेंस. द क्रिमिनल अटैक्ड द विक्टिम. नंबर 6, हिज कंपनी इज ग्रेटली सीकिंग आफ्टर. उसकी कंपनी के को तलाश किया जा रहा है. इज ग्रेटली सीकिंग आफ्टर. हिज करेज हैज डैश हिम. यहाँ पे तो हैज आपको बता रहा है कि हैज, हैव और हैड के बाद वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हैज के बाद आप फॉरन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लें, हैज फॉरसेकन. नंबर 8, द टेरिफाइड पीपल डैश टू द माउंटेन्स. जो घबराए हुए लोग थे वो पहाड़ों की तरफ भाग गए. इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस, फ्लेड टू द माउंटेन्स. नंबर 9, द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू ट्रेस द कल्प्रेट्स. कल्प्रेट्स को तलाश करने के लिए पुलिस ने कोई कसर बाकी ना छोड़ी. इट्स एन इडियम. द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, पास्ट टेंस से हम यूज करेंगे. एंड नंबर 10 इज द रॉबर डैश हिम अ ब्लो ऑन द हेड. रॉबर ने, चोर ने उसके सर पे हिट किया. इट मीन्स दैट सिंपल पास्ट टेंस, द रॉबर स्ट्रक हिम. स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म हम यूज करेंगे, स्ट्रक हिम अ ब्लो ऑन द हेड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. That's all about this poem, its explanation, paraphrasing, question answers, its phonetic transcriptions of the words, and then last correct forms of verbs. It is complete in all respects, and I hope it is useful for you. Thank you for watching this video. Please like, share, and subscribe. I thank you all.